Start. So, A very warm welcome to one and all on behalf of WIRC. I, CA Ashita Shah, welcome you all to the series which kick-started on 17th of May. Today, we are very much privileged to have with us CA Murtuza Kachwala, Chairman WIRC with us. I request Sir to enlighten our participants with his words of wisdom. Over to you, sir. Thank you, Ashita. Good afternoon to all. At the outset, let me first thank the Women Empowerment Committee Chairman Shweta Jain in absentia and Vice Chairperson Pinky Kedia for organizing such a really beautiful in-depth program on the tally, and even Mrs. Kapoor Madam, who has been a backbone of the IT, and for helping us in setting up this program. And let me also thank Vandana Dodhia, the speaker for this 5-day session. She is an expert in tally, and I have had opportunity to listen to her in the past. And 5 days means that it is going to be in depth and in detail, and the type of things that she is covering. It's excellent. And let me also thank Ashita, the coordinator for today. Ashita, thank you very much for all the selfless service and the time you all give to the profession. Let me first answer the query by Vidya Kulkarni. So, Madam, actually, the CP committee of ICI actually gives the CP, and we need to upload the programs there. And one speaker can speak only for 3 hours maximum. That is the problem. Now, if we do this tally series and we have 5 days, 5 speakers, then we can get 15 hours. But otherwise, if there is only one speaker, then we don't get CP. The learning happens, but CP is not there. Now, Vandana made one request, like at least one day, whether we can give 3 hours or not. I think that is one jugaad like we are used to. Let me see whether that is possible. And if yes, we can talk to Ajitnath Tiwari at CP committee, upload the whole program and tell him at least give 3 hours. So I don't know, I am not committing, but we can try that. Coming to, I think, see the IC at WIRC this year, the theme which all the council members together have coined is LEAD. That is leap towards innovation, excellence, achievement, and development. And we said, let us have 5 goals and let us have activities to measure the goals. And the 5 goals, let me touch upon 2 which are related to the subject today. 1, to equip the members in technical matters. So whether it is direct tax, we are doing multiple sessions on the new changes. If it is accounting standard, we are doing it. But this time we said, in addition to the normal direct tax, indirect tax, and accounting standard, let us also have a refresher course on multiple other subjects, like refresher on insolvency and bankruptcy, refresher on valuation, refresher on internal audit. So members can pick up if they want to do something else in addition to this. And we just recently finished on 13th and 14th of May a national conference on internal audit, and tremendous response. 180 people in the auditorium and total 500 people attended, 300 plus virtually. And now we are launching the internal audit refresher course also. Similarly, we want to launch a refresher course on cooperative, opportunities in cooperative, opportunities in MSME and startup. So multiple things will bring to members so that they know that what are the various service lines which are available, and then they can decide which one they want to pick up for providing services to the members and engage in their professional this thing. The second goal this year is to equip member technologically, bring technology to the members. And we are doing multiple things. And one such program is here on Tally Prime, where although we do accounting, but we don't even know that there are so many features in Tally. And which Vandana is touching upon. So we can even get, say today she is going to cover inventory. Now, of course, if inventory detail is properly captured, we can get the inventory report as of today, which item and how much is the stock,
But in case we want to do an aging, that more than 1 year old item not moved, more than 2 years more not moved, that can be picked up. So assuming the accounting policy of the client is like if inventory is not moved for more than 1 year, we'll write it off or we'll provide for this thing. Immediately a report can be made available. Now, if the management or someone wants to go and analyze, like, okay, if I purchase something and the items are not moving for more than 6 months, that is possible, and that would again lead to like, okay, wrong items being purchased. Then, like, if you want to go and do an investigation or check who purchased, whether there was a requisition or not, whether there was a proper purchase order or not, so that can be done. So that means wrong purchases happened. Okay. Or otherwise, if someone goes and says, "Can ये तो material substandard था, तो फिर quality check क्या हुआ? Receiving and नहीं, अगर quality check नहीं हुआ, तो that can become a query." So I'm saying there are so many reports which can come out, and similarly, we are talking about data, but like inventory, but there are reports on data also. So data is more than 6 months, less than 6 months can also be picked up. Then, like, if there are certain cases where we want to see a date's not moved, advance is not moving, those type of reports can also come out, and it can be done for even advances and creditors and everything. So there are so many things which can be done. So Tally software can also be used for some form of data analytics. If not more, a little basic data analytics can be done using Tally. Let me also touch upon one more aspect of it and then stop. See, today still accountants are doing accounting. But maybe 2 years, 3 years or 5 years from now, even Tally will have a feature where like invoices will be scanned and either through an OCR or RPA technology, everything will be read and invoice entries will be done. And in India, the Vodafone set up a shared service center in Ahmedabad 16 years back. And that time they implemented OCR technology and 98% invoices were getting recorded automatically. So the moment scanning happens, the first thing which it picks up is vendor code. If vendor code is proper, it picks up that. So it knows immediately if it is Pinky Kedia, it is an audit. Then it goes to service or item code. If the service or item code is properly captured, then it says audit fees account debit to Pinky Kedia to TDS payable. And how much is the TDS payable? The master defines, okay, auditor 194J 10%, whatever. Similarly, like if it is a raw material, then from the item code, it will pick up and calculate how much is input credit receivable. And on the invoice, if the input credit is not matching, then you can always say that the vendor has made the wrong invoice, because here you already put in the master, it is 5% or 10% or 12% or 28%, whatever, that way. So that matching also happens. So see, sales invoices can be prepared from Tally and it goes into data and revenue directly and into the sales summary. If purchase invoices are scanned, it will also be done. Bank reconciliation Tally can do. Okay. Now what is required? Even Tally is building features for a bill to bill analysis, closing balance breakup, and if you upload someone else's ledger, your data ledger, reconciliation. So almost everything is going to be automated, and there will be only those few last accounting entries which will have to be passed. Okay. Even depreciation calculation and interest calculation, I think, will be done. So a lot of changes are happening, and they are also adding a lot of analytics features. So I'm sure we'll keep on updating, but whatever features are available, if we use them well, I think a lot of work can be done. So excellent topic, and one of the best faculties, I think, on the topic here. So with that, thank you very much, and thank you for giving me the opportunity, Pinky madam, and over to Ashita to you. Thank you. Thank you, sir, for your guidance. Thank you, Pinky ma'am and Kapoor ma'am, without whom this session won't have been possible. Now, since we are into this series, now we are really eager to hear from the most electrifying speaker, Vandana ma'am. So over to you, Vandana ma'am. So at the outset, good afternoon to one and all. Thank you, Murtuja sir. See, luckily what you touched upon, on the first day we had a company creation, second day we had a auto bank reconciliation. Yesterday we had GST configuration, master configuration, and statutory compliance, and also TDS configuration. And tomorrow I will be touching upon paperless audit and data analytics inbuilt in the Tally. And what I am trying to tell them is that this is inherent. Well, you don't have to do anything
customization outside. जो package Tally आपको देती है, Institute has tied up with Tally. So multi-user which costs 54,000 to any supplier wants to buy, for the chartered account it comes at 10,800. Just imagine. But you should be 5 years into the practice. जो older into practice है उसको तो 50% discount है. जो youngsters है उनको हम 10,800 देते हैं. मतलब throw away price, you can say, multi-user to youngster. That tie-up ICI has done with the Tally solution. So one must take the advantage of that. And once you are holding COP, you will get one license of Tally. That is what. So I say one audit नहीं किया था करके एक prime ले लेने का. So now let me start today with my participants. All of you are excited, eager to know what is cost center? कुछ check box में आ जाए? Yes. हाँ. So let us have some example where we will be using this cost center technology. So one example is what came immediately in my mind was event management company. Different event I want to find out the profitability. Another example was a school accounting where you are having different standards. Vanna, your video is paused. Vanna, your video is paused. I think. Just check me. विनय जी एक बार वंदना से बात कीजिए ना. हाँ All are requested to wait for 2 minutes. Maybe there is any technical glitch. Yeah. Vanna आ गई तू. आ गई वंदना. Today there is a challenge. Internet is going and coming. So we have to deal with that challenge. And I have to share my screen with you. Okay. One person is asking that Tally is giving license branch office wise, not member wise. अरे देता है, मेंबर वाइज ऐसा नहीं बोला है मैंने. मतलब मेंबर्स इन प्रैक्टिस वर्ड यूज किया है. फिर समझो मेरी हेड ऑफिस बॉम्बे में है, फिर अहमदाबाद में ब्रांच है, तो अहमदाबाद की ब्रांच में एक सीए है जो प्रैक्टिसिंग है, इसलिए उसको भी मिलेगा एवरी प्रैक्टिसिंग सीए. बट अभी इसी कंपनी में 5 सीए है यहाँ पे बॉम्बे में सेम जगह पे, तो एक ही लाइसेंस मिलता है. अंडरस्टैंड है. सेपरेट ब्रांच में वहां पे डेडिकेटेड अपना रूल है इंस्टीट्यूट का कि देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी डेडिकेटेड, तभी वो ब्रांच गिनी जाती है. डब्ल्यूआरसी या आईसीआई का वो रूल है. इफ यू वांट टू हैव then you get it. Earlier every practicing member was used to take license, but I think तभी भी रूल था, ऐसा ही था. There, see, they used to take your member card, and then if you are in a form, so you are in a 2 forms, तो तेरे मेंबरशिप नंबर से यहाँ लिया है, तो दूसरी फॉर्म में दूसरा भी होना चाहिए अलग जगह पे, तो उसके मेंबरशिप नंबर पे मिलेगा. इट इज लाइक दैट. So one person can have one, but my branch will have another chartered accountant who will carry out, na? So on branch wise मिलेगा. It is like that, and we should not drag into that. Our main target is to learn the topic, correct? अपना वो target ही नहीं है. Lectures and presentation. माने मम्मी फोन घर पे फोन कर रहे हैं यार.
Sorry, huh? Mama at home and she's missing me. So Control C and we'll go to tally prime, specify path, Control V, enter. Now, workshop on Tally WRC, our main company, which we opened. In that, we will first want to create the cost center. So, what I want to create is enabled or not, that is first thing. Cost center लिखा है, show more. Can I see cost center? No, I can see only Godown. So F11 फीचर में जाके सबसे पहले कॉस्ट सेंटर एनेबल हुआ है कि नहीं, दैट आई हैव टू सी. सो यहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग फर्स्ट वी नीड टू एनेबल एंड देन ओनली सी. यहाँ पे देखो एनेबल कॉस्ट सेंटर्स, आर यू विथ मी? सो फर्स्ट वी विल एनेबल. वो मैंने फर्स्ट डे जानबूझ के एनेबल नहीं किया था ताकि आपके यू नीड टू अंडरस्टैंड F11 feature when I enable certain things, I will get that thing. So first I will enable cost center, Control A. Now I go to create. Now you see cost center has come. Now how the concept of cost center, basic is the primary. So now let us have one example of junior KG, senior KG and primary. 3 sections we can take. So that 3 sections will become your cost center. So junior KG, depending on your requirement, you can create. And एक cost center के अंदर भी sub cost center you can open, you can drill down. That is also possible. Junior KG. हम लोग वैसे भी कर सकते हैं कि ITT batch 1, batch 2, batch 3. अब WRC के point of view अगर आप सोचते हो, but then it will too much, you know, that way. So you have to analyze what kind of data I'm going to work with. Primary, चलो हो गया मैंने. फिर सेकेंडरी भी होता है. एक्चुअली प्राइमरी के अंदर होना चाहिए था व्हाट डू यू मीन, जूनियर एंड सीनियर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना उसको. अंडरस्टूड? ऑडियो इज ओके ना? Yes, yes, audio is okay. ना आज चैलेंज है यहाँ पे. Are you saying something or you are mute? मैं कुछ नहीं कर रही थी. मैंने क्या किया, मैंने लेन में से उठा के डेटा मेरे मशीन में डाल दिया. अभी देखो सी कॉलम कर दिया. हाँ बट मुझे पता तो नहीं था बच्चे लोग को. लेकिन यदि कुछ नहीं बोल रही है तो ऐसा लगता है पता नहीं हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं क्या. नहीं नहीं नहीं. और वंदना साइलेंट जोन मतलब थोड़ा टेंशन आ जाता है ना. करेक्ट करेक्ट. ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू सी द पार्टिसिपेंट ना. थोड़ा वो भी अपने को डिस्टर्बिंग कैरेक्टरिस्टिक लगता है ना उनको. That's why I am doing thinking later it is really a nightmare talking to wall यार.
Okay, Now now today Asita is also there. Asita, you Ashita, can yeah, also she's a good interact friend. with her Now we are on in a cost between. center. अच्छा, now Yes. जितना मैंने बनाया है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में cost centers and you will see junior, primary and senior. These three we created. Okay. Now these are the cost centers which will work as a profit center or a cost center alternate. Ashita, you are not on a mute, beta. Sorry. So let me now have some ledgers created for us. So we'll create some ledgers. So participant will agree. There is something called school open होती है तो admission fee होती है. So yeah, school fees can be a group. School fees, and this is under sales. My revenue or income direct. अगर मुझे बिल जनरेट करना है तो मैं सेल्स में करूंगी. अगर मुझे बिल जनरेट नहीं करना है, खाली रिसीट इश्यू करनी है तो मैं इनकम में भी ले सकती हूँ. So depending on your choice, you can create the group under the particular heading. Okay. Not applicable. Previous not applicable. एडमिशन फीस हो जाती है. फिर क्या होता है, ट्यूशन फीस, मंथली फीस लेते हैं वो लोग. और कभी कभी वो कुछ एग्जाम फीस भी लेते हैं. ठीक है, हो गया. अब मैंने थोड़ा फास्ट कंट्रोल किया, सो दैट आई नीड टू अगेन अल्टर. व्हाई? अगर अदरवाइज दैट जीएसटी कैरेक्टर विल कीप ऑन कमिंग. So why I do certain exercise, I try to make you understand that whenever you create any ledger, be careful. क्योंकि when you create ये applicable आ गया मतलब GST पंगा स्टार्ट होता है. So while creating the ledger, don't jump, don't haste makes the waste. So while creating the ledger, we should be calm and composed to know what I am actually, because this is one time exercise. But every time you don't need to repeat. So while doing the first time, we will do it peacefully. So now I created three income, and now what will be the expense ledger, right? So let me create expense ledger. So teacher को क्या देते हैं तुम? Salary. Teacher salary. Now I want to track. I have 5 teachers, समझो, for that matter, and I want to track person wise. So teacher salary can be the group and name of the teacher. Okay, Mr. A, teacher for say junior, and under group teacher salary. That can be your expenses direct. It is a direct nexus to the income related. Teacher salary. Okay, and अगेन यहाँ पे ये जो भी एप्लीकेबल है उसको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि F11 में वो एप्लीकेबल है. या तो नया कंपनी में करती थी तो इजी होता था. नाउ टीचर सैलरी हो गई, मिस्टर ए हुआ, तो अगेन आई कंट्रोल आर, आई विल यूज मिस्टर बी टीचर फॉर जे सीनियर कैटेगरी and teacher salary. Remind me to show you, Pinky, group vouchers. That's a good report I have encountered last year. मुझे किसी और ने, मेरे कोई क्लाइंट के स्टाफ ने बताया था, मैंने खुद ने एक्सप्लोर नहीं किया था. बट दैट रिपोर्ट वी मस्ट यूज. ग्रुप वाउचर करके भी टैली में एक ऑप्शन है देखने का. तो जैसे ये हम लोग जब क्रिएट कर रहे हैं ना, what do you call it? What is meant by group voucher? अब वही याद रखना, खाली लिख के रखता है पे बिफोर आई फॉरगेट. अच्छा, सीनियर में 2 टीचर है तो मिस्टर सी भी डाल दिया यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल. देन मिस्टर डी फॉर सीनियर. क्या होता है, जूनियर केजी सीनियर केजी हो गया. और फिर क्या होता था तुम्हारा, मैंने क्या डाला मैं भूल गई, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्शन. चलो, टीचर्स applicable, not defined, and then done. Some expense. फिर क्या होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उनका जेरॉक्स एक्सपेंस सबसे ज्यादा होता है. पेपर, जब एग्जाम पेपर सेटिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो इट इज एक्सपेंसेस
indirect but related to that उनके स्कूल रनिंग एक्सपेंस. फिर उनका मालूम है वो स्कूल बस रहती है, पिकअप कन्वेंस एज अ मेजर एक्सपेंस. सो स्कूल बस चार्जेस. Why I am making this? So cost center में अगर हम profitability, you want to check some expense has to be there, some income has to be there, then you will have an idea कि how exactly it is going to showcase you. If you don't put, you will not get the feel of it. अच्छा, स्कूल बस चार्जेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं टीडीएस काट सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो कैन वी एक्सप्लोर हियर टीडीएस एप्लीकेबल. तो कल का थोड़ा बहुत रह गया होगा तो आज तो अभी नाउ न्यू कैटेगरी नीड टू बी क्रिएटेड. टीडीएस है ना कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ली है. सो कैटेगरी नीड टू बी क्रिएटेड. तो मैं जहां पे खड़ी थी ऑन दैट आई प्रेस्ड ऑल्ट सी फॉर क्रिएटिंग द नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस. So Alt C, then TDS on contract charges. Under section 194C, 94C is the code. Residential का कितना है 1% है ना, 1% है. Rate for other deducted types 2% and threshold is 75 था 1 lakh हो गया ना अभी इसका, 150 हुआ इनके और आश्रिता किसका कॉन्ट्रैक्ट का. पहले देख, वन कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 30. 1 lakh 1 lakh और अभी 1 lakh. 1 lakh हो गया It's ना. 1 lakh. हाँ, one Yes, बस. lakh 1 lakh. हाँ, बस थोड़ा लोगों को जगा रही हूँ कि बेसिक नॉलेज अपना रिवाइव होते रहे. आजकल तो हम लोग देखते ही नहीं, और सॉफ्टवेयर ही सब टेक केयर करता है. this is also a problem. हाँ, but slowly we are becoming dependent, and that's why I am again reminding you that let's go back and research in our random access memory. So any expenses our participants? Okay, definitely I will showcase you any days लेके देखना पड़ेगा. Vandana, we have given them homework yesterday only that they have to practice in Tally. हाँ तो So किया I है ना, think जगदीश भाई ने किया है. कि जगदीश भाई एक्चुअली डन, तभी पता चला ना कि डिजिटल अफिक्स नहीं that's हो why रही. that's I why really that's why appreciate. I really appreciate. हाँ, केयर टेकर, यस. फिर नाश्ता पानी, मतलब स्कूल में मालूम है आजकल वो अन्नपूर्णा चलता है, कुछ तो होता है, मतलब दैट इज म्युनिसिपल स्कूल्स दे हैव दैट ना, खाना देते हैं उसका कोई तो mid day meal बोलते हैं मिड डे मील एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिड डे मील चार्जेस होते हैं. पर वो तो जनरली स्पॉन्सर्स होते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज में कवर कर लेते हैं वो लोग. बट किसी ने बताया तो वही अच्छा बताया. नाश्ता मतलब सम फूड एक्सपेंसेस, केयर टेकर क्या बोल सकते हैं, केयर टेकर एक्सपेंसेस, एंड दैट caretaker salary. डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा. वो जूनियर केजी में बैठते रहते ना बच्चे लोग को, तो कोई संभालेगा ना ऐसे. और वो टीचर है, वो पढ़ाने वाले टीचर है, एबीसीडी सिखाने वाले, ऐसा डिफरेंस यू नीड टू एनकाउंटर. सो सोचो, यू हैव टू अप्लाई. दिस इज मास्टर क्रिएशन असाइनमेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी. ऐसा सोचने का एंड काम करने का, देन यू विजुअलाइज. सो थोड़ा मोटा मोटा हम लोग ने खर्चे बच्चे ले लिया है, एंड देन लेट्स हैव सम स्टूडेंट. अब ऐसे होता है कि मेरे 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो वो तो एक सिंगल बनती है आपकी फीस की एंट्री. तो वो आप एक्सेल में रख के डायरेक्टली वन सिंगल एंट्री भी पार्क कर सकते हो, या रिसीप्ट प्रिंट करनी है तो आपको यहाँ से भी हर चीज यू नीड टू कीप पुटिंग द वाउचर्स, सिंगल वाउचर. तो F6 स्कूल की शुरुआत हुई थी से 10 जून से होती है, तो हम लोग तो अभी मई में ही एडवांस ले रहे हैं. तो 18 तारीख को हमने रिसीप्ट ले लिया. और स्कूल में अभी भी कैश कभी कभी ले सकते हैं, चेक से भी लेते हैं. ऑल मोड्स आर अवेलेबल टू देम. So we will have all the modes. Yes, Swaran Lalita, I will try to keep in English only. Don't worry. And I think with my efforts, you will also learn some Hindi, our national language. Okay, so bear with me. And coming back to this, see, most of the time in schools, they are accepting check, cash. Nowadays, e-fund transfer is also coming. So let me start with say cash account.
And this is single entry module. We other day I showed you F12 configuration, and you can make it double entry. Those of you who are used to work on double entry can press F12 and make a double entry system of living. Whatever we are viewing is a single entry mode of voucher. Okay. Now it was a school fees. What are the name nomenclature we have given? ट्यूशन फीस होती है, एडमिशन फीस होती है. तो चलो नया बच्चा आ रहा है तो वो साथ साथ में आपको एडमिशन फीस देगा से 1000. अभी यहाँ पे ब्यूटी इज कमिंग. कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, विच कॉस्ट सेंटर? F11 में जाके आई एक्टिवेटेड कॉस्ट सेंटर. So across the new ledger created, cost center is applicable. Okay, and you need to define. Suppose ये बच्चा junior KG में आ रहा है. Okay, so 1000 rupees. Then you will have a tuition fees. और मैं 6 months का एडवांस में लेता हूँ. पर मंथ की 2000 है तो 12000 मैंने ले ली और ये भी जाएगा जूनियर केजी में. और ये हो गया आपका. फिर हम बस चार्जेस भी साथ में ले लेते हैं ना उनसे, स्कूल बस चार्जेस. और वो 500 into 6 month, 500 into 6, 30,000 जूनियर केजी. अभी मैंने जैसे ही एंटर किया जूनियर अपने आप वो, बिकॉज जे लेटर इज द फर्स्ट लेटर इन द बॉक्स. आई प्रेस स्पेस बार, जूनियर, प्राइमरी एंड सीनियर. सो मैंने कुछ भी नहीं किया तो फर्स्ट जो है दैट इट विल एक्सेप्ट. So junior KG by default it has accepted. And the first transaction is done in junior. So in the second transaction also by default Tally will bring junior, but you are receiving for senior, then you have to make the entry by your own selection. So यहाँ पे आप वो common fees या whatever for division 1 जो भी नरेशन में डालना है हो गया आपका एंट्री डाल दो. और फिर इसको ऑल्ट पी करो and I want to configure it. So receipt mode on the top of the voucher, yes. And whatever transaction details you want, narration you want, not each entry I want. Meaning name instead of leisure name. अगर वो if you want checked by and verified by, prepaid by, if transaction detail is there, then you see whatever you will input, it will print. So Control A. Now we will see the preview. So this will look like this. यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया, whatever information receipt through cash and on account of Aman fees for division 1, prepaid by, checked by, verified by. So this is inbuilt tally. Understand? So this much automation one can have. Okay. So this is same. Now let us have one more entry of all three section. We will have some receipts. So Bank of Baroda, admission fees 2000 है. यहाँ पे अभी सीनियर केजी में आ गया. और का ट्यूशन फीस आएगा 3000 into 6 months. 6 months का हम लोग लेते हैं. So I'm pressing S for bringing senior. Okay. Then school bus charges. Standard है सबका. 500 into 6. Senior KG. And I am saving this. So this is Pankaj for standard 1. जैसे भी whatever narration you put, that will be printed in the Alt P current preview. अब वो ऐसे आ गया मेरा zoom. So you'll have that receipt number, this, and this. And bank transaction details, if I had mentioned the check, I will get the check details also printed there. So if you want, you can have the check details. No, I want to put the check numbers. So
I will say no. Now it has shown me the admission fees, the check or whatever information is there, then instrument number, whatever is the and dated, and the bank name, whichever bank the check was there. So all information when you fed, पेज अप प्रेस करके वो मैं स्क्रीन पे लेके आती हूँ, ऑल्ट की करंट प्रीव्यू टू. Now it will print the transaction detail also, check number and this. Okay, I want to print the किस बैंक का है, तो वो configuration में allow, if it will allow me then I can do that. So, one thing you have to understand, cost center word is for the expenses. It has nothing to do with cash and bank. अगर आप वो खोलोगे ना तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा. अगर मेन हेडिंग है, अगर आप सेपरेट बैंक अकाउंट रखते हो, सीनियर का अलग जूनियर का अलग, देन यू कैन टैग बैंक अकाउंट फॉर से सीनियर केजी सेपरेट. अगर बैंकिंग एक ही अकाउंट है तो वहां पे आपको कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए. कॉस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आई वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी और द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट or a cost center for that matter. Okay, so I will make understand. ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर सपोज स्टूडेंट वाइज आपको करना है तो डेटास क्रिएट करने पड़ेंगे आपको. जो 60 डेटास है वो हर एक का नाम से आप खोल सकते हो, यू नो. सो इट इज सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दैट व्हाट फीचर्स आर अवेलेबल. अब इन डेप्थ करेंगे ना तो दिन के दिन भी कम पड़ जाएंगे हमको. What was our intention, Sarbani Kapoor, Pinky, or we wanted you to at least touch upon that. These are the inbuilt features available in Tally. खाली हमने F11 करके 5 चीजों को enable किया और फिर उसको implement किया तो भी काफी सारी MIS बन सकती है. That's what I'm trying to bring out to the audience or a participant. तो ये हो गया. आपको जैसे रिपोर्ट चाहिए ना वैसे आपको लेजर क्रिएट करना है. The way you want to get the report, you create the ledger or a cost center accordingly. As simple as that. That is what we learned from today's exercise. Now again, one senior KG भी ले लेते हैं. We will have one receipt for senior KG. समझो उसमें डेट चेंज कर देते हैं. एक ही बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा. अब उसको एडमिशन तो होता है ना, वो new student comes or he is getting promoted. मतलब you are coming to this division, I am charging admission fees. So we have standard admission fees one time. तो सीनियर की जगह पे अभी मैं प्राइमरी सेक्शन, तो एक सेकेंडरी सेक्शन मैंने डाला था, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं रहा. तो आई कैन क्रिएट स्टैंडिंग हियर ऑल सी सेकेंडरी section under primary. So all C functionality of Tally works everywhere when you want to create new things, new Godown, new inventory, new ledger, new cost center, everywhere that is working. Then tuition fees was 4,000, 24,000, 6 months. 6 months we are taking secondary section. Then सेकेंडरी में भी स्कूल तो लगती है बच्चे लोगों को. सेकेंडरी सेक्शन, चलो ये हो गया आपका. तो अभी यहाँ पे वो अलग 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 ट्रांजैक्शन टाइप क्यों दिख रहा है, क्योंकि अलोकेट करना है. सेम चेक इज गेटिंग अलोकेटेड. अब यहाँ पे हम लोग ई फंड ट्रांसफर यूज करेंगे. तो आप डायरेक्ट 30,000 का एक ही चेक आया है तो ऐसा you can write total Mahindra Bank and combine for standard 5. प्राइमरी लिखा है, सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी मीन्स 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, राइट. चलो उसमें भी डिवीजन whatever narration, this is I'm just trying to bring out. This is income side we did, now expense side we do फटाफट. So F5 and then I pay through बैंक. एंड अगर TDS डायरेक्ट काटने से अच्छा है कि हमें बुक करना है
school bus charges का. So my suggestion will be that proper way of accounting is that first you book the bill. So F7 और जून में जब स्कूल स्टार्ट हो गई है तो समझो कि 30 जून को आई एम रिसीविंग अ बिल फॉर स्कूल बस चार्जेस से कॉन्ट्रैक्ट है. अभी इन्होंने बोला 1 लाख का थ्रेशोल्ड डाल दिया है. तो अभी तीनों सेक्शन के हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और 1,25,000 का उसका बिल आ रहा है. So 1,25,000 is the bill, but we will apportion it. Primary का इतना है, secondary का तो single bill can be again apportioned. That also I wanted to show you. कि junior KG का से हमारा खर्चा है 40,000. Then senior KG का है 40,000. And then secondary section का है 45,000. So accordingly, it can be created. Alt C. Mr. A for school bus. जो भी नाम रहेगा expenses मैं ऐसे ही बना रही हूँ आपको समझ में आवे. Expenses, creditors for expenses, maintain bill by bill, yes it is must. फिर TDS deductible you have to write yes. Individual है तो yes, या जो वो कंपनी रहेगी तो वो individual. TDS in saving voucher, महाराष्ट्र डिटेल्स डालो, कोड डालना जरूरी है नहीं तो वो 20% उन्होंने पहले ही ले लिया था. सपोज कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड व्हाटएवर यू डिसाइड. सो 123,750 123,750 वो खुद लेके आ गया. सो ही हैज डिडक्टेड द टीडीएस फॉर मी. सो न्यू रेफरेंस 125 and 1% 1250 has been deducted. See, to yesterday's session I wanted to carry forward थोड़ा बहुत touch upon so you know how TDS very very categorically and TDS and contract charges ledger we need to create. So Alt C, TDS on contract charges under I think internet problem at Vandana end. She will get soon. विनय जी एक बार वंदना से बात कर लीजिए ना कि कुछ उसके मदद से प्रॉब्लम हो रही होगी तो. In between, you all can type your questions if you had done any practice in for last 3 days. So if you have any question or query, you can put in your chat box in the meantime. लाइट चली गई अभी यहाँ से. मैं पहले ही सोचा था पिंकी के ऑफिस चले जाऊं. अंधेरी में पिंकी का ऑफिस. हाँ सर आया. Yes.
पावर नहीं है मैंने हॉटस्पॉट से चालू किया है एंड डेटा अभी डाटा कहाँ से लो ऐसे उड़ी है ढक से सोच सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज इम्पोर्टेंट But you had saved your data in your PC, na? हाँ मेरे पीसी में था लेकिन वो उसमें पावर ही नहीं है तो कैसे चालू करेगा लाइट चली गई Okay. Okay. So on which PC you are working on your laptop? अभी जस्ट इमीडिएटली लैपटॉप स्टार्ट किया ताकि एटलीस्ट वहां पे वैक्यूम है उसको भरू मैं आके अरे उसकी ने क्या एक सेकंड 4-5 मिनट्स हम लोग थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं कुछ 5 मिनट में मैं रिज्यूम कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ He has created the how he has created the group and how he created the ledgers. Okay, so it is one type of practice. So just allow me to share my screen. Whether are you able to see my screen? Okay. So this is the account we are doing. Now type where I have to go first. Fatapat. To create the ledgers and group for cost center. What she taught you today. First, I have to go to A or F11 or F12. F11. Correct. I will go F11. Then active cost center. Correct. So I will go there. Accounts. Oh, I have to go to Tally Prime. Just a minute. I'm opening Tally ERP9. You should have told me that I am in Tally ERP9. Okay. So in Tally Prime. I will open company. What I have to select? Configure or migrate? Tell me. Migrate. Correct. I have to select migrate. Okay. It is telling C drive. I can't tell.
Backup, no. First configure, correct. Specify path. Okay. This is path. Now I have to do migration. Okay. Now I have to go to F11. In F11, I have to do in F11 there is no cost center. Upper, so more me, yes. No. Where I have to go, F11. More detail. No. Okay. Yes. Correct. Now go to yes. Okay. Yes. Okay, I have done this already done. Then TDS. Yes. I will type something. MUMT 4754. Just a second. Same. Individual. Okay. Accept. Okay, cost center we have done. Now where we have to go? Create. Whether we have to go to create? Yes, sir. Okay, then group or cost center. First we have to prepare cost center, correct? All can give reply if you all are there. Yes, cost center. Okay, in cost center what we have prepared? Primary. Okay, first senior KG, correct. Senior KG. Then junior KG. Then secondary. Then primary. Okay, so we have created cost center. Now we can see by alter tab what cost center we have prepared. Junior KG, primary, secondary, and senior KG. All for now ledger creation. We will create ledgers. Okay, so tell me the ledger's name, what we had created.
Okay, admission fees. So admission fees in which group, which cost center, or in which head? Tell me under which head. हेलो पिंकी मैम, हाँ पिंकी मैम कॉल करिए ना थोड़ा मुझे. हाँ, एक सेकंड कर. हेलो पिंकी मैम. So I'm back. So Pinky Tari, we can't see Talika screen of yours. Okay. So now while she is working, she can press Alt G to go and check which ledger she has created. Chart of accounts में जाके आप देख सकते हैं. Alt G का ना maximum use कीजिए. It is like a toggle key. Alt tab जैसा अपन use करते हैं. Vandana, can I send you this हाँ, बोल. data? Can I send you this data? Mail. What we did? मेल में भी हाँ अभी मेल हमें- कर रही है, कर दे तो मैं फिर शेयर स्क्रीन करके मैं चालू कर लेती हूँ यहाँ पे.
तेरा फेवरेट रिया भट्ट, हाँ वही मैं बोल रही थी, जितने मैं वो कर लेक्चर देती खोले हूँ। हैं, हाँ इसमें आप मैंने भेज कुछ दीजिए मेरे को. So what we learned today, the participant, you must understand, challenges are bound to come. We need to address them. I rushed to my friend's office and I carried my laptop, and there my friend is not available, so I don't have Wi-Fi password. So I'm working on a hotspot right now. So it's a part and parcel of life. आज ही अडानी ने हमारी बिल्डिंग की लाइट बंद कर दी, बोलो. So we need to gear up and face the challenges, nothing to worry. And the participants, please bear with us. That's what a humble request I can do. Jagdish Bhai had one query of a digital signature. Meantime, she's sending me the data. I will take you up. Can you want to talk, Jagdish Bhai, what you did actually? I can allow you to speak. Attendees may Jagdish Shah, Jagdish. I mean, Urvi, Pantarup, you have not changed your name, no? So for me, you are Jagdish. So, Urvi, what I suggest, suppose if you are right now in the office, that time, what happens, Pinky, I am not able to hear your voice properly. Issue in this. Vandana, I sent you email, please check. Okay. आवाज आई अच्छे से, बुलंद आवाज आई. My audio is okay. क्या है? Yes, नेकी और कुछ पहले पानी दे बेटा. बिस्लरी ले लेना छोटी वाली. हॉटस्पॉट पे डाउनलोड करना मतलब चेंज है. वो आदत नहीं रहती अपने को लैपटॉप पे काम करने की, तो मैं बोला चलो अपना माउस भी लगा साथ में कैरी करने का. ये क्या है? यूएसबी है, देखो जरा ठीक से लगा दो ना. ठंडा नहीं है, चलेगा, चलेगा, बताइए. थैंक यू. Vandana, you got na? अरे ये 10,010 रार जो दिख रही है, वो एक्सट्रैक्ट का तो इधर इसमें होगा ही नहीं शायद, लगता है. तो मैं डायरेक्टली भेज दूं तुझे? हाँ देखना. You can give me backup file. Let us explore. If you make a backup file and restore, the very first day we were to teach backup restore. So Tally, Pinky, can you make a backup file over there? ऊपर जाके डेटा में देखो बैकअप है टैली प्राइम में. And then send me the backup file. अरे हाँ बराबर. उर्वी, यू हैव टू सिलेक्ट प्रिंटर एज अ पीडीएफ. हाँ तो वो इज नॉट एप्लीकेबल. पहले आपने डिजिटल अटैच करके रखा है ना आपके मशीन में, एंड देन ऑल्ट पी करके ऑल्ट पी में जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्ट किया, then it will prompt you. Would you like to attach the digital signature, or prompt you while attaching the digital signature?
So, Urvi, you can talk to me tomorrow, say 12:30, and any desk. We will take any desk and sort that out because other participant will now not be keen, right? And then certain things the live देखने पे ही समझ. When you see the live, na, you exactly come to the issue. Okay. અરે તું જીપ આપે છે પણ અહીંયા મારું લેપટોપ છે ને my laptop is new, just brought my brother, so whether I can unzip, that was the issue. See, if you can share your screen, Tally का screen, Pinky. Let us explore ना, वो बैकअप रिस्टोर भी सिखाना ही था ना. जनरली वी आर यूज्ड टू राइट क्लिक करके हम जिप करके डेटा फोल्डर भेजते हैं क्लाइंट को. बट देयर इज आल्सो वन फीचर ऑफ टैली दैट यू कैन टेक अ बैकअप फाइल .001 एंड दैट आई कैन रिस्टोर हियर इन माय टैली प्राइम. सबसे पहले लेट मी चेक माय टैली प्राइम इज देयर और नॉट. यस, इट इज देयर. You all can see my screen? I don't think so, right? You can see my screen now? Okay. Great. Yes. Vandana, you can take my File any and desk. Vandana, you can take my any desk that can take that file. अरे यार ये बात भी अच्छी बताई तूने. बट ये नया लैपटॉप लेके आई हूँ मैं जो दुबई से जब जस्ट माय ब्रदर ब्रॉट फॉर मी. और बस वेरीफाई किया वहाँ मुझे कैमरा नहीं मिला. हैड आई रिमेम्बर्ड ना, मैं मेरे ऑफिस से वेबकैम लेके आई होती ना तो इनके मशीन में घुस जाती थी मैं. समझी? ये कहाँ है डाउनलोड? हाँ. So all of participants learn this. जब चैलेंज आती है तो इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना होता है. हमारी पिंकी ना उसके लिए बहुत होशियार है. Geared up. पिंकी तुझे म्यूट करना पड़ेगा. हाँ तेरा रिमोट your Pinky remote ID please. इधर चैट में डाल सकती है पर्सनल में. Hello. Got it. Technology is as such good. अरे इसमें साउंड बंद कर दे. साउंड एनी इसका साउंड बंद कर. यहाँ पे साउंड बंद कर. यहाँ पे देखो ये साउंड का बटन है, उसको बंद कर. पिंकी दिस हाँ बंद कर उसको बंद कर. पिंकी अरे वो साउंड बोले सामने ब्लू कलर का विंडो दिख रहा है बेटा, उसको ऑफ करो. यहाँ पे अरे वो साउंड ना एसूस के नीचे. हाँ हाँ उसको बंद कर देने का. तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी. ये बंद कर. बस. Okay. Now take me to the tally screen. No.
इतना सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जूम वहां से तू नहीं चला सकती है. Anyways, this is taking too long, right? Create company, workshop, tally. Simple, fast. महाराष्ट्र. पिन कोड अगर डालना है डाल दो. बुक्स बिगिनिंग हो गया. पासवर्ड अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि we want to save on time. Maintain accounts. And now you want me to show you Alt F11 में show more feature. Yes. And then enable cost center. Yes. Now today we are going to see inventory also. So, but integrate accounts with inventory, no, because I don't want to pick that up. And yesterday I was asking you. In that bill that was accounting and billing quantity was coming yesterday, you all remember. So here discount column was yes, and here separate actual bill quantity was yes in configuration. That in the evening I went and searched okay, why in the bill it was coming. So from F11 inventory option it was picking up. So that you need to remember. Then text इसको यहाँ पे 27AA KFV 8788J1Z3. Then periodicity advance visits पता नहीं one entry past and yes, limit अभी 1 lakh income and साथ तो कर सकते हैं. इनवॉइसिंग इफ एप्लीकेबल से यस 100 करोड़ के ऊपर यस रहेगा. टीसीएस आपको एप्लीकेबल रहेगा तो आप यस करना. टीडीएस में यस कर देती हूँ. देन वी हैव लर्न MUMV 4 character, then 1 2 3 4 5 and then A. That is the way it is. Individual HUF you have to decide, and then person responsible you can write the name of the director or whosoever is signing. This we did yesterday. Designation अगर आप जो भी रहेंगे आप you can put, and the person who is signing उसका पेन नंबर आपको डालना है. That's what you have to do. If you do all this exercise, 27A form will be generated. Ignore IT exemption limit for TDS deduction. I said it is a negative question. So you want to ignore, then say yes. And if you don't want to ignore, then say no. Okay. Then browser access report. That day I have shown you. Tomorrow again, remote access I will show you as an auditor. Enable multiple addresses. In F11, multiple addresses comes because of I can have branch office, head office. Accordingly, we can decide this. And mark modified voucher is also when the data comes to your office, you can classify if any corrections you are doing, then you should say yes to mark modified vouchers. Okay. Now, further there is yes. Let's say yes. Now for today in inventory, you want to know the godowns. And job costing we will not be touching today, but inventory I will make you aware, and the godown. That is very important, how one can create. So now in create, cost center is there, enabled, but it is, I have to create. So we created, first was junior KG. थोड़ा repetition होगा. I will rush senior KG, then secondary section. That is done. And we are through. These 3 sections we have created.
Then ledger, we will have a Bank of Baroda. Under the bank accounts, then while doing account number, you should put it properly. So bank reco only they pick up the account number from this particular account number and match while you are importing the bank statement. So that you need to take care. IFS code, if you remember, daloge better. Then bank name, I said if you are online, you will get the window from which you need to select. Then you go to branch. I say in Borivali, so Borivali branch. Checkbooks, yes, kiya, then you can have number 100, 2, 000, 150, whatever will be the number. हाँ, so it is prompting me कि इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, कहीं पे अगर गड़बड़ है तो tally is giving me an alert. Triple zero, and then I need 100. Okay, done. 000, 150. Okay, so 100 से start किया है तो 51 उन्होंने count ले लिया है. Understood that? So what I need to do is 101 से start होता है कोई भी checkbook. So 50. And number of checkbook, second, third, tally will pick up. ये भी हो गया. Printing configuration, select from whatever you want. Format, that also I showed you. And ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया Control A. मेरा ये repeat telecast. बैंक हो गई मेरी. अब मुझे बनानी है स्कूल फीस में एडमिशन फीस. अंडर दी बैनर हम लोग ने स्कूल फीस वाज द रेवेन्यू आइटम. सो ऑल्ट सी आई क्रिएटेड द ग्रुप स्कूल फीस अंडर द इनकम डायरेक्ट. यू कैन क्रिएट अंडर द सेल्स ऑल्सो. आई रिपीट, बराबर. And then not applicable, this is not applicable, so not applicable. So right now, agar in this we don't want GST, temporary I can freeze it by pressing F11, function F11, and I don't want as of now, so every time it will not prompt me. So Control A. This I can do to save my time. Applicable. Then we had a tuition fees. Then आपका ना ऐसा लग रहा है कि पक्का हो जाएगा. कॉस्ट सेंटर, स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, स्कूल बस चार्जेस, that is also my income and not applicable. Control A. Then what we had a school bus charges. Under expenses, direct अगर मैं लेती हूँ, not applicable, but my TDS is applicable. So here, this is a new company. I have to create the category. So I'll press create TDS on contract charges. Then section 194C, enter 94C the code, enter. Then pen के साथ 1% and rate for other deducted 2%, and threshold was 1 lakh as discussed by Ashita and Pinky. Okay, so Control A. Then we had a teacher. So we had a Mr. A, senior KG teacher. Okay, so I had created another group, teacher salary. टीचर का स्पेलिंग क्या होता है? TACHA. ये गुजराती मीडियम का प्रॉब्लम. टीचर सैलरी. ओके, दिस इज माय एक्सपेंसेस बट डायरेक्ट. नॉट टू वरी, नहीं पता है तो पूछ लेने का. लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेने का. ओके, टीडीएस एप्लीकेबल. अच्छा, यहाँ पे कैसे होगा? Salary may be 192 can be applicable. So you need, if applicable, you can deduct the TDS from the salary of the teacher. I'm just giving you right now, not a need of our, not applicable. Okay.
फिर we had a control R feature, so control home चाहिए मुझे, and I will come back here and make Mr. B and इसको delete and then junior KG teacher. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लैपटॉप में काम करना आदत नहीं रहता है ना अपने को. जूनियर केजी बाकी एज इट इज, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल आर. आई हैव टू रश बिकॉज आई हैव टू कवर गोडाउन ऑल्सो. Just give me 2 to 5 minutes. We will wrap it up. C, then delete, then junior की जगह पे अपना था secondary teacher. Secondary teacher. So that is as far as this was concerned, and some snacks charges you wanted to have. And we had a printing and stationery create किया था हम लोग ने, if I'm not mistaken. So printing and stationery, and then indirect expenses. ये हो गया कंट्रोल ए. अब मैं जाऊंगी वाउचर में. वाउचर में सबसे पहले मैंने F6 करके रिसीट किया था और हमने बोला था हमें 15 मई को पेमेंट आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा में समझो एडमिशन फीस 1000. कॉस्ट सेंटर was junior KG. Then we had a school tuition fees, whatever may be the amount. Now I'm just putting some figure to get you feel of it. क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं देखेंगे there is no fun. ट्यूशन फीस हो गया, स्कूल बस चार्जेस हो गया. ओके, अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा. ये स्कूल बस चार्जेस की जगह पे हम एंड करके फीस कर देंगे. बोथ द नेम्स आर common, no? So it will give school bus fees. We are collecting basically, right? So collection should be fees. So say 3000 and junior. So enter. And समझो चेक से आया है, whatever number you put, and then we had put the bank name and we have written the Mr. Aman for division A. जो भी आपको लिखना है जूनियर केजी वो वहां पे है ही. और मैंने आपको रिसीट बता दी थी. Am I right? Any check box? I know that was wrong. I have scored. Don't worry. हमें ना कंटेंट समझना है. Right now we have to learn the how we have to use tally to the our advantage. That is what I am trying to make you understand. Cash. Then again replica. अब ये समझो इतना सारा फिगर्स मुझे डालना पड़ रहा है. Why I will waste my time? So I can go display account cash book. This is shortcuts I am teaching you. Bank of I will do Alt 2. So duplicate entry straight away, and I will just punch cash. थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे turn around करना पड़ेगा. 2000. Then I will do senior KG. Then I go to tuition fees. It is double the junior. यहाँ पे सीनियर में हाथ से सिलेक्ट करके डाल रही हूँ. स्कूल बस फीस स्टैंडर्ड रखा था हम लोग ने सबके लिए, सीनियर केजी. एंड यहाँ पे नरेशन में मिस्टर अमन की जगह पे हुआ हमारा पंकज, एंड जूनियर की जगह पे हो जाएगा सीनियर. समझे आप लोग? सो आपके पास जो एंट्री करनी है उसको भी आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट रहते हैं. सो ये मेरा हो गया. और अभी इसी को मैं Alt 2 करके I can do Alt 2. फिर मैंने किया था F2 1st June function F2 1st.June enter. Then Bank of Baroda, again admission fees was 4000 for senior secondary section, sorry. Then tuition fees were जो भी है. अभी जाने देते हैं अपने को. कंटेंट में मत जाओ, कैसे सिलेक्ट करना है उस पे फोकस करो आप. ये हो गया. और फिर ई फंड ट्रांसफर ले लिया था हम लोग ने और ऐसे ही डाल दिया था कुछ भी. ठीक है. एंड इट वाज कमल. चलो स्टैंडर्ड 5 ये हो गया आपका रेडी. डेटाबेस इज रेडी. नाउ वी हैड पार्क वन एंट्री ऑफ पेमेंट, एंड टू डू दैट वी विल क्रिएट वन लेजर ऑफ दैट एक्सपेंस. मिस्टर ए स्कूल बस
expense, and it was under creditors for expense. So Alt C, creditors for expense. मुझे आदत है, so I will always do like this under sundry creditors. Whenever you create the ledger, you have to follow the sequence. Maintain bill by bill details, yes, and TDS deductible, yes. He is individual and HUF. I will select that TDS deduct in the same voucher. Bank details डालना है, डालो. परमानेंट अकाउंट नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो 20% पे टीडीएस कट जाएगा. ओके, फिर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर टीडीएस. नाउ जीएसटी मैंने डिसेबल कर दिया, सो इट विल नॉट प्रॉम्प्ट, दरवाजा बंद कर. सो टीडीएस एंड देन टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. ठीक है ना, कंट्रोल ए, दैट्स डन. So let's park the entry now. Voucher. First I said book the transaction as the F7 expenses. School bus charges. Now it is charges. And then 1.25 lakh रुपया लिया था हम लोग ने. And one transaction you can have a bifurcation of 3 section. अलग अलग cost center का भी खर्चा होता है. So junior KG is say 25,000. Then my senior KG is say 40,000. And then my secondary section balancing figure is coming. And I will write 2 because journal is there. And then Mr. that school bus expense जो मैंने अभी बनाया था, तो TDS automatic deduct होके आ गया है. I told you time and again, if you configure your ledger properly, Tally will take care. New reference, first credit 125, new reference debit 1250, TDS has been already deducted by Tally. Now Tally will tell you, not tell you, it will prompt you, okay, put TDS and contract charges ledger, I have to park that 1250. Enter. And narration for the month of जो भी है, May, वैसे May में चालू नहीं होती है स्कूल, but आजकल तो कुछ dates कहीं भी जा रही है. So we did. Now display statement and then cost center. Display statement of account and cost centers. कल हमने outstanding management देखा था, अभी यहाँ पे cost center. Cost center, there are 4 types of report. One is cost center summary. So broad summary is here. Junior KG, some debit is there, some credit, and then the closing balance. Now you can understand debit is my expense and credit is my income. So profitability per center you can come to know from this report. Understood? So any question till now? My voice is coming. Then cost center breakup. Here individual cost center breakup, Alt F1, you should always use Alt function F1. So drill down. So it is showing item by item. This is income side, this is expense side. Acha. Okay, I wanted to get time is running short, so I was going little fast. But I think hope I created all the ledgers and you all understood how it is. See, you have to Actually, Vandana, chartered accountant understand. I ask Vinay ji. To phone pe, हाँ. I asked Vinay ji to increase the time. You have time till 5:30. You have time till 5:30. हाँ चलेगा. 5:25 तक हूँ मैं. 5:25 तक हूँ. मैंने किसी को 5:30 बजे का टाइम दिया था आज ही. पर ठीक है, 5:25 I can stretch myself. I can stretch up to 5:25. Participants, are you agreeing to that? फटाफट yes डालो. जिनको सीखना है वो तो बैठेंगे. हाँ, till 5:25. Good. So the study is important and sorry for the inconvenience because आज ही लाइट को मेरे को परेशान करना था. Anyways, so coming back to the subject, you have to explore wherever CA having branch office accounting, there also you can use cost center. So these are very, very important topic. And reporting, all these reports can be exported in Excel. Then you can have a workaround. Ledger wise bifurcation comes.
ledger wise also comes, cost center wise also comes, group wise also come. So whatever way you want, you can get it. Like अभी हमने तो printing and stationery भी नहीं डाला था ना, ये समझो वो स्कूल के एक्सपेंस होते हैं, वाउचर्स में जाके अगर मैं पेमेंट की एंट्री कर देती हूँ डायरेक्टली, समझो बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने रिसीट बुक प्रिंट कर दी, 1500 was the charge and equally distributed between all the section, समझो. So these all you can explore. And अगर आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये चेक हमने कॉन्फ़िगर किया रहेगा, तो it will look like this. Okay. So again you go display statement of accounts, cost centers. Cost center summary is the first thing where each center summary comes. But moreover, you will prefer, I think, cost center breakup is a better way. Single cost center chahiye to you can come here and have alt function alt F1. So this is how one particular cost center or profit center gives you profit or loss. You will come to know. Cool. So let us now jump to the inventory. Had I had my yesterday's this thing. So anyways, let's start with one manufacturing journal. And what we want to manufacture is, say, computer. So in any manufacturing industries, you will require a raw material. You will have a ingredients. So आपको bill of material पहले बनाना पड़ता है. Whenever you want to create a bill of material, you need to create first bill of material. You बोलिए नहीं बोलिए जो करें नहीं साधु सर. You want me to show you once again that today I will not take that because we are already running short of time. I am going to make one small video on that I will be posting. And हमारा last session जो था auto bank reconciliation का वो भी YouTube channel पे आने वाला है WRC की. Just bear with us, okay? Okay, so I go to create. Now there is हेड ऑफिस में रहते हैं तो मटेरियल समझो एक अगर मैं जॉब वर्क पे भेजती हूँ आप ना यू हैव टू विजुअलाइज कि दिस फीचर वेयर यू कैन यूज. समझो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई टेक अ यार्न एंड देन आई सेंड इट फॉर जॉब वर्क. उस पे मुझे कुछ वीविंग नीटिंग के लिए भेजना है. That report also Tally will give you. And how we can transfer the material, that is called stock journal. Okay, one raw material yarn is coming to first to my B1D office or sometimes bill to ship to. So directly it goes to job work A वाले के पास चला गया job work के लिए. तो that जहाँ पे job work पे जाता है उसको Godown कहा जाता है. So this is passing on journal from one location to another. Second हमें सीखना है कि manufacturing concern में मेरे को एक प्रोडक्ट जब बनाना है, so what are my ingredients, and that can be done through manufacturing journal. So that is the voucher type. So let me take you to the voucher type and let us create one manufacturing journal. It is a type of stock journal. So you have to select from the available list of vouchers. Then whatever numbering modules you want to select, you can always go inside and do.
It's up to you. Prefix, suffix आपको डालना है डालो. Only thing you have to remember is use as a manufacturing journal. This is important. Use as a manufacturing journal, that you need to press yes. You want to track additional cost for purchases, say yes and control A. I have gone to voucher type. हाँ वो करिश्मा पूरे 5 दिन का वीडियो हम लोग स्क्रीन करेंगे. जो जो चीजें हमें एडिट करनी है वो करने के बाद ही वो अपलोड होगा, तो शायद 1 हफ्ता और लग सकता है बेटा. ओके, एंड आई कैन डू यू वन दिस थिंग. आई एम पुटिंग हियर टेली simplified by They a YouTube channel, and my contact detail is also I'm mentioning. Okay, if you are stuck somewhere, don't come with very petty things. But if you can technically reach out, then only we will entertain. That my humble request. Functionality of Tally, see, help whenever you are exploring now. Whichever module you are, it will take you to that, or you can have search facilities also available there. Okay, some videos are there, so you can take help of them. Okay, now I was on a voucher type that we created manufacturing journal. Thoda or location mein, let's understand. Main location exists by default. Do you want to alter main location or create a new location? I want to create a new location. So new location is my B1D, say B1D Godown. Okay, and then I will save it. Save कर दिया. And वहां से समझो factory कहीं XYZ जगह पे, तो factory can be your अलग से बना सकते हो आप. You know, location. So location means it is storing the Godown from one location another location. या job work वाले को भी आप Godown में location में create कर सकते हो. Location is equal to Godown. Location is equal to Godown. Understood? So अब और क्या चाहिए आपको? स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे हम लोग. अच्छा, व्हाट यू मीन बाय कैटेगरी? लाइक अभी सैमसंग की 10 मोबाइल हैंडसेट है, तो कैटेगरी सैमसंग. रेडमी इज माय कैटेगरी. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. ग्रुप कैन बी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, बट कैटेगरी सैमसंग है तो सैमसंग के सब मोबाइल उसमें जाएंगे. फिर रेडमी के हैं या एप्पल के हैं, तो दैट इज योर कैटेगरी. सो दैट इज फॉर MIS. दिस विल बी हेल्पफुल. कैटेगरी क्रिएशन as such, it doesn't have any other effect on our accounting, but it is for MIS. One can have stock category in the industry where it is applicable. Okay, now I wanted to have a stock group. Abhi, when you are having a manufacturing concern, stock group name can be raw material, right? Quantities to be added, yes. And finished goods can be your another group, stock group. Okay, now 2 group I created, stock group. I will now create the item, stock item. First item, let me have a computer is my finished product. So it will be under finished goods. Now you need to create. So I am clicking on create. समझो के numbers या pieces, whatever you feel like. But have a consistency. Don't keep on changing. एक number में खोला, एक piece में खोला, so then it will create chaos. So we prefer numbers. Formal name is numbers, no decimal. So ये हो गया आपका. Now मैंने GST applicable नहीं किया था, क्योंकि GST करें तो लंबा हो जाएगा, तो let it be. अच्छा, when you create, now this company, the company creation was today. Sometimes you are using some other software, and today from 1st April 22 you want to start your accounting in Tally. So opening quantity may be there, so that you can enter here. Say I had a 50 का stock and location कहाँ पे पड़ा था. So से भिवंडी में मेरे 25 नंग पड़े थे और मैं 40,000 में समझो मेरा कंप्यूटर बेचता हूँ. तो this is my stock lying there in Bhiwandi, and in factory I am having this, and this 40,000 is my
value of the product, cost of making that product. Now to create, say, computer, you will first have a raw material. That raw material needs to be created. Then we can create a bill of material, because ingredients क्या है पहले वो ready करना पड़ेगा. तो समझो कि you will require processor, motherboard भी आता है. So under raw material numbers में ही डालेंगे. और समझो कि मेरे पास 50 पड़े हैं. कहाँ पड़े हैं? सब मेरे फैक्ट्री में ही पड़े हैं, 50 के 50, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन करना है. और मदरबोर्ड, डोंट गो बाय प्राइस, आई एम जस्ट पुटिंग इट 5000. ओके, देन मदरबोर्ड के बाद यू रिक्वायर रैम, दैट इज रॉ मटेरियल, एंड you 8 GB RAM. There will be n numbers of bifurcation. 4 GB RAM, 4 GB RAM. स्टैंडर्ड रैम कम्स 4 GB. फिर आपके कंप्यूटर में 2 स्लॉट होते हैं, वो 4 GB की 2 रैम लगती है, तब जाके वो 8 GB होता है. 8 GB की एक रैम नहीं आती है, रैम चिप 4 GB की एक आती है. जैसे वो पेन ड्राइव 2 GB की आती थी, 4 GB की आती थी, 16 GB की भी आने लगी, 32 GB. Our mobile have started increasing from 64 GB to 128 GB. Similarly, you have to understand random access memory, वो जो RAM जिसके ऊपर कंप्यूटर चलता है. तो मैंने अभी, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ, बट आई एम होल्डिंग सम 100 pieces with me, and suppose it is costing me 1200. So that will be part of this. You will require keyboard. Then it is my raw material, and it can be my finished goods. But हम अभी bill of material को follow कर रहे हैं. आप retail counter नहीं चला रहे हैं तो वो आपका raw material ही रहेगा. So you had a 50 this thing lying in factory. So all this exercise you will do when you do the master configuration once जब आप start करते हो. बाद में तो system is already there set. The accountant has to do the entry on all the inwards and outwards. Okay. So क्या था ये कीबोर्ड. So कीबोर्ड अच्छा वाला भी चाहिए, तो कॉर्डलेस कीबोर्ड भी आता है. माउस रखने पड़ते हैं. चलो रॉ मटेरियल. फिर आपका you will require that monitor. मदरबोर्ड लिखा क्या मैंने? बाकी है ना शायद. एक मैं सपोज भिवंडी में रखती हूँ अभी मॉनिटर, फिर हम वो स्टॉक जर्नल से ट्रांसफर करेंगे उसको. अंडरस्टैंड? सो मॉनिटर 5000 का है, इससे भी हो सकता है. फिर मदरबोर्ड just like a preliminary feel. You will have your ingredients, your production, create that total chart for making that, how much you will require. So opening balance 50, it's lying at factory. Motherboard 7500. अब आपको चाहिए ना, तो आप स्टॉक समरी में चले जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने क्रिएट किया, function alt F1. So 1 is finished good is my heading, then computer, then raw material. These are my this, and this is my closing balance. Understood? Till now clear? जाग रहे ना सब? yes no करो. स्टेटिक हो जाते हैं ना. आप जुड़े रहो मेरे साथ. थैंक यू एकता. ओके, सो now we have some opening stock we have. Then we want to create one BOM. Let's कर लो इस Alt G, create a master. अब मुझे बिल ऑफ मटेरियल बनाना है. एक मिनट, बिल ऑफ मटेरियल, यहां से मैं बाहर आती हूँ. ऑल्ट जी, बिल ऑफ मटेरियल मुझे बनाना है. बिल ऑफ मटेरियल.
Alt G, show more. यहाँ पे मेरा स्टॉक वेरी स्टॉक एजिंग है. BOM कहाँ है? देखो पूरा स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस है. गोडाउन रिपोर्ट से आप देखो, जैसे आप चालू करते हो, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, गोडाउन रिपोर्ट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम. मुझे मेरा मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए बस. लोकेशन समरी हो गया, स्टॉक एजिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया. नाउ what we need to do is I want to create voucher. यहाँ पे देखो स्टॉक जर्नल वाउचर्स इज देयर, एवरीथिंग इज देयर. मास्टर एंड वाउचर स्टैटिस्टिक्स, स्टॉक आइटम रिपोर्ट्स, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स. ओके, મને છે ને VOM ક્રિએટ કર્યું છે. VOM ક્રિએટ કર્યું છે. We have already created that journal, no? Manufacturing journal. चलो ठीक है. Vouchers, then other vouchers, then manufacturing journal. Okay. Now name of BM, यहाँ पे name of the product is SEC. How I came voucher entry के मॉड्यूल में मैं आई. जर्नल क्रिएट, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाना है. वो जो हमने एक नया वाउचर क्रिएट किया था आज. Awesome. So name of the product, I'm going to manufacture computer. Look, बिल ऑफ मटेरियल जो है, अभी मुझे बिल ऑफ मटेरियल नॉट एप्लीकेबल है, मुझे उसको बनाना है. मेन टारगेट वो है. यहाँ पे भी है सब कंट्रोल. Give me 1 minute, Pinky. Hello.
In the stock item, sorry for the interruption. I just finished with my tea, sorry. So in the stock item, computer, in the configuration, show all configuration, more configuration, set component list bill of material on stock items. You have to say yes. You can have a standard purchase price and sale price, and while doing the data entry, you can modify, alter. So that facility is also available in Tally. Right now, we are not going for standard. First, we let us create one component list. So Control A, and now I am going to voucher in this computer. I want to create one bill of material. एक minute. I have to create a component. Once I create one component, then only my total product can come, that is what I'm doing. अरे यार आशु हैरान करती है. So I am not getting over here. Participants, are you with me? Stock item alteration, computer, finished goods. Now we have already in F11 specified create bill of materials. Now in this alter components, yes, and then you have to create that computer FG, whatever name you want to give one unit of manufacture is say one. What we will be the ingredients, one critic kahan se lena hai. So we will all take it from factory, and you will require one only. Samjho, then monitor one from factory. Then you will require one motherboard. So I am giving you a sample. As per your production, whatever industry you are related to, accordingly you will make efforts to create bill of material. Sorry. Processor
at factory 1, then I need RAM. Now for making, now all machine I am making with 2 RAM. So that is how you have to make this. And this is, so almost, see, there will be or be hard disk will be required. You know, hard disk is not there. So bina hard disk kaise chalega aapka computer? So nobody prompted me, ma'am, where is hard disk? Okay, so hard disk need to be there. Okay, so this is how you need to make. And hard disk की sizes होती है terabytes, now तो 500 GB. So accordingly, size and everything will be designed. Okay, for making one A type of computer, these are the configuration. See, what I have to understand is that computer is what I am, my finished goods. In finished goods, I have to have a components bill of material to be created, and then I will save it Control A, Control A, Control A. So this is all I have saved. And now I am going to voucher. Now, if I want to create one particular this thing, name of the product is say computer. And now see, it will take total item consumption. So location is the factory. And I'm manufacturing say 25 units. I'm manufacturing 25 computers. So it will take all this 25, and RAM it will take 50. Understood? That's what we wanted to understand. Assembly charges will come, no? Yahan pe extra, additional. So we'll create Alt C assembly charges, expenses direct, because वो manufacturing cost है मेरा, right? और आपका TDS applicable होगा तो वो बात की बात है. अभी हम पहले एक बार सेव कर लेते हैं. एंड हियर इट कैन बी परसेंटेज बेस और लमसम के 1500 रुपया. अभी 1501 का है समझो असेंबली चार्जेस, और मैंने 25 किया है, तो ऑल्ट सी 1500 इंटू 25 मैन्युफैक्चर किया है तो 37,500. सो दी total additional cost and effect cost allocate to primary item, and then Control A. So let us see how it looks like. So you understood? I did manufacture something, and now we will have a sum reporting. F12. I want to see yes opening transaction outward. तो थोड़ा सेल भी करेंगे तो समझेगा. And then Control A and function Alt F1. Now see, you had a 50 computers, you manufactured 25. And the costing is now on यहाँ पे 15,000 आया, तो you must have observed 2-3 में तो rates आए ही नहीं थे, 2-3 में मुझे rates आए थे, ऐसा मैंने देखा था. So let us explore that, कि why it was like that. यहाँ पे देखो keyboard, rate is coming, monitor, rate has not come, हमने डाला भी था. Control enter. 5,000 was there, na? So this should have come, but somehow it has not come. You see, that's why I say standard costing also you can use, you know. RAM का क्या नहीं है मुझे. Control enter. 1,200. So this is the gray area, but थोड़ा configuration properly होगा तो that also it will take care. We don't have to worry about that. इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो let me put some 25 hard disk we add in say factory, and hard disk nowadays 2000 में भी मिल जाती है depending on what size you are. Okay, so this is how. तो भी देखो इफेक्टिव रेट आपका 24,900 हो गया. फिर यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखो एवरेज आउट कर रहा है. सो मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन अलग से देखना है, तो मैंने कल बताया था ऑल्ट एन इफ यू यूज देन देयर इज अ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, देन एंटर. तो हर टाइप का वैल्यूएशन मेथड आपको दिखाएगा वो. दिस इज डिफॉल्ट
यहाँ पे देखो default लिखा हुआ है. You go on a right hand side, it will show you FIFO. FIFO is 33,55,000 and the default is 3355. First in first out same. LIFO is same. Standard costing it is 31,57,500. अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पकड़ रही हूँ तो मेरा वैल्यूएशन अलग हो रहा है. एवरेज में सेम आ रहा है 3355. If I go to last purchase cost, so the valuation method has very important aspect, and that's why everybody will be asking why in 3CD they keep on asking whether any accounting method has changed, whether valuation method of closing stock has changed. So this is one report of stock summary. Now we will also understand the Godown. क्योंकि गोडाउन भी हमें सीखना है. गोडाउन इज गोडाउन इन अदर वे और जॉब वर्क यूनिट. माय ओन गोडाउन आल्सो इज देयर और आई एम सेंडिंग मटेरियल फॉर जॉब वर्क. दैट आल्सो नीड टू बी coming in this kind of body. Okay, so now if I go to display and invent to this thing, टू बोलेगा तो टू मॉड्यूल. एक इन्वेंटरी बुक्स भी है. बुक्स के अंदर देखिए आप कितने रिपोर्ट है. स्टॉक आइटम, लोकेशन, स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक कैटेगरी समरी, स्टॉक ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल रजिस्टर. तो नाउ वी हैव पास वन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंड इफ यू रिमेंबर समथिंग वाज लाइंग इन भिवंडी गोडाउन, सो आई कैन जस्ट ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम भिवंडी गोडाउन टू दैट गोडाउन if required. And what you mean by physical stock register at month end or a year end when you are taking a physical stock, that is something called one physical stock register voucher is also there. So suppose quantity is 60 units and on your PC you find 55 units, then you can write there is a physical stock register voucher is there. यहाँ पे you can go to other vouchers and there is something called physical stock. So you can write on 31st May when I took the stock, this was the actual quantity. That is what the feature tally has. Say computer. So 40 की जगह पे मैंने जब भी लोकेशन था मेरा फैक्ट्री में यहाँ पे 50 लिखा है, but when I observed it was only 49. So रिपोर्ट में कैसे आएगा? डिस्प्ले इन्वेंटरी बुक्स and now stock group summary, finished goods 99. अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक मिनट ना, मैंने जो हाथ से लिखा ना वो उसने फैक्टर करके डाल दिया. ऐड कर लिया उसमें फिजिकल स्टॉक. Are you understanding? But that should not be the case. Actually, that is how it doesn't work. वो एक्चुअल स्टॉक कितना था ना वो आपको डालना पड़ता है. वहां पे 49 है तो वहां पे 49. ओके, 31 मई को 50 में से 49 करना था. उसने एंट्री देखो किसका मारा है. 24 मारने का कोई मतलब नहीं है. June 99. This is giving heavy result. This is not, it should be, na? This is something weird answer giving me. Skip the date field during voucher, provide additional. ये सब ठीक है. कंप्यूटर मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन जब मैं ऑडिट पे गया था, I found this because this is out of book adjustment date. It is not the transaction need to be going and closing stock उसको 59 ही लेके आना चाहिए basically. अरे 49 ही लेके आना चाहिए. यहाँ पे ये जो 74 लेके आ रहा है तो this is a ambiguity need to be addressed. But this is how it is not functioning. Mark my word. It is whatever I have seen. I pass that physical stock entry. So whatever is here will become this much. That is how it actually works. Tally works. So maybe I'm doing something wrong. I don't remember. But this is not the fine-tuned result of what we
कैटेगरी तो हमने अभी तक बनाई नहीं है, वी नीड टू क्रिएट समथिंग, 2-3 मोबाइल बनाएंगे, देन कैटेगरी का रिपोर्ट आ सकता है. ओके, नाउ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री. Stock query is the beautiful feature of Tally. While doing the data entry, now they have given this feature in data entry also. If I want to see the stock of or last traded item, every transaction will come. हम थोड़ा एक्चुअली परचेज और सेल्स करेंगे ना, तो ये रिपोर्ट अच्छा आएगा. It shows you see name, computer, finished goods, closing balance, cost price, average cost, then category agar if their closing value, standard selling price if you have already mentioned, figured out. फिर last purchase कहाँ से हुआ था, last sale कहाँ पे हुआ था, location कौन से कहाँ पे पड़ा है. तो this is a very beautiful report of Tally, and this is available while doing the data entry also. I can show you. They included, I am not actually comfortable with what that, because the date of voucher was 31st May and the new manufacture has taken place on the 1st of June. So it can't factor that, right? So that is some ambiguity. Let me have 1 or 2 purchase and sales. Tabhi this movement analysis will make sense, you know. So we have 10 more minutes to go. In that we'll have 1 or 2, 1 purchase and 1 sale bill. So you'll have a movement analysis. Today's session, what you have to understood, basic मैंने सिखाया स्टॉक ग्रुप कब होता है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम के अंदर बिल ऑफ मटेरियल को आपको एक्टिवेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपको वाउचर टाइप में जाके क्रिएट करना है, और उस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में नीचे आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस एनेबल करना है. देन यू कैन क्रिएट अ बिल ऑफ मटेरियल. सो बिल ऑफ मटेरियल ओके करने के लिए F11 में फीचर्स में बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करना है. एंड while suppose computer is my finished product, in that finished product I have to activate the set component bill. There if you say yes, then it will allow you to create a bill of material. You can have a multiple bill of material. Single bill of material ऐसा जरूरी नहीं है. You can have a multiple bill of material. And wherever you are now, whatever you want to learn, see I am on a location and then I press F1 help, Tally help. It will redirect me to mota to wherever I am. And then generally you just type location. एक मिनट ना, मैंने थोड़ा फास्ट go down locations FAQ. Everything will come. Every question is there available. How to generate Godown summary, including unused Godown. This all reports I wanted to show you, but due to paucity of time. But let us go here, make some 1 or 2 entries, and सादा purchase करेंगे, no GST वाला purchase. Okay, I hope you will understand. So let me do one voucher entry of say purchase. Now while doing the purchase, supplier invoice number is 1256, and it was of say 30th of May. You can do that way. Okay? Party account name, supplier A. So it will be creditors for goods. Yes, control A. So that also you need to remember कि आप कैसे उसको करते हैं. और यहाँ पे वो हमने GST not applicable ही रखा है right now. So it will save our time. Okay. Now I will create purchase ledger. So GST में मैंने GST होता तो local purchase करके एक कर सकते थे, but ठीक है purchases. Do you want me to enable GST? I think that will make sense. F11 में कर ही देती हूँ alt function F11. नहीं तो क्योंकि अभी तो era ही GST का है ना. Why don't we alt function F11? We need to activate actually. Function alt F11 and yes. Because मुझे उसके बिना तो जमे नहीं, GST के बिना तो काम करके मतलब ही.
मैंने एक्टिवेट तो किया ना, और सी applicable K and goods and not applicable कंट्रोल K. अभी हमारी जो आइटम थी, समझो हमें motherboard. So first I will select this motherboard, backspace, control enter, because now GST is applicable. So set alter में yes करके आपको on value taxable करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से उठा सके. से motherboard is 18% and save. Don't go by actual. अभी मैं ऐसे ही ले रही हूँ अपने लिए. लोकेशन सब जो वो फैक्ट्री में आ रहा है, 10 यूनिट्स में परचेस कर रही हूँ मदरबोर्ड के. वो लास्ट प्राइस वो लेके आ जाता है. एंड समझो मॉनिटर भी मैंने खरीदा. लोकेशन फैक्ट्री 10 मॉनिटर्स 5000. एंड ये जो येलो बार है ना, वो जब तक टोटल के ऊपर है तो इट इज आइटम. वंस आई प्रेस एंटर इट इज नाउ लेजर आइटम. लेजर आई हैव टू सिलेक्ट. एंड नाउ आई विल हैव इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. GST सेंट्रल टैक्स. आप बोलोगे बहुत रिपीटेशन है, लेकिन बहुत जरूरी है, और वो जो खुद लेके आता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनपुट CGST. मॉनिटर में मैंने GST कितना % डाला मुझे तो याद भी नहीं है. 1 सेकंड के अंदर वो मैंने लिखा ही नहीं है तो वो लेके ही नहीं आएगा. ओके, सो से 12% है मॉनिटर में, और इसको सेव कर दिया और इसको सेव कर दिया. सो दैट ऑल नीड टू बी टेकन केयर कि हम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. ये इनपुट हो गया. और सी इनपुट कंट्रोल R, सॉरी, इनपुट SGST GST स्टेट टैक्स. सो ये आपका सब डिटेल्स, ईवे बिल जो भी आप परचेस करते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो. एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन मेंशन. न्यू रेफरेंस. और आपने नोटिस किया होगा सप्लायर इनवॉइस डेट कैन बी 30th, माई एंट्री डेट कैन बी 31st May. तो कभी कभी वो 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है. सो बिल डेट कैन बी X and your voucher date can be Y. Okay, so that can be addressed that way. Only problem, government is not understanding my inventory. I have to, so there is voucher called receipt in, stock in, material out. That system we can use in Tally, so that 2B can be taken care as far as purchase in the GST portal, and stock we can take care through using voucher name, material in, material out, receipt in, receipt out. There are 2 vouchers available in Tally. Whatever you like you can use for, because material will come now on 30th. Suppose 31st May कोई material आ गया and that party doesn't upload the GST and portal पे bill, so it will, you can't claim to be this month they have waived, but next month onwards they will be strict. So at that time what will happen? I cannot keep on tracking. So party ko payment bhi I will give based on the my accounting entry, because I will then park it on the 1st June only, because I will get the set off in June month only based on the GST and criteria. So that care I have to take care. So that facility we can use. See, bill date will be same only which is printed on the bill. So while doing the purchase entry, where I'm going to get this set off in say June month only. So I will enter it on 1st June. Okay. And date of invoice as well as date of invoice. Accordingly, you can work on that. Got it? Ashita, you have something to say? No, I don't have anything to say. Ane, now see 2 minutes, I will just show them the movement analysis. So one purchase I have done, and I think display,
statements of inventory. Movement analysis is a report, very beautiful report. Group wise also you can see category wise item. So much analysis is inbuilt in Delhi. What they use the word MIS, it is already there in Delhi. So I want to say finished goods. So if Khali, this is one report where I will get like this. Another, I go to group analysis. I will get like this. Kya aaya, kya gaya. Stock item analysis is also beautiful. Computer, Alt F1. आप जहां जहां भी Alt F1 है तो आप यूज कर सकते हो. कुछ खरीदा, कुछ बेचा. So report will come here. So movement analysis is there. So keep exploring, keep learning Tally. And tomorrow will be another important session of paperless audit, remote access. Well, participant will agree with me. It's an ocean. जितना करो उतना कम है Tally के अंदर. अभी तो मैंने purchase order, sales order को हाथ ही नहीं लगाया है. So you can have a purchase order in place, sales order in place. In the corporates, they have a culture. बिना order purchase होता ही नहीं है. So that way you can configure that. So I think with all hiccups, you all joined with me and had a passion hearing for the session. Thank you very much. Thank you so much, Vandana ma'am. Wonderful session in spite of so much technical glitches. You ensured that everything was covered and up to the mark, and it was really exhaustively covered. Pinky ma'am, you have anything to say? Okay, so we end up for today's session and we will see each one of you tomorrow for the same continuation of the same electrifying session by Vandana ma'am. Thank you, everyone. Yeah, I must We have to appreciate. thank Badresh officially that he allowed me to use his office. Yeah, and I must Last minute thanks. entry. Yeah, and I must thank all the participants for आवाज their. कम आ रहा है मुझे. बोल रही हूँ, I must thank all the participants कि उन्होंने इतना वो किया, बेयर किया हमारे साथ. And I must thank Vandana also कि उसने उतना trouble लिया and she shifted from her office to other office. So thank you Vandana, and thank you all the participants. Thank you, everyone. Bye. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow. विनय जी एंड कर दीजिए सेशन.